So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the third part of MH CET revision series, which actually we are conducting for the past 3 weeks on Sunday at 8 p.m. So this is the third part. We have already done part 1 and part 2. Okay. So let us begin with today's class, where we will be discussing the important questions which would be helpful for you in MH CET class. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. Acha, since this is the third part and we have already done part 1 and 2, so where to watch the previous parts? Just first of all, go to our channel. सबसे पहले channel पे जाओ, please subscribe to it. Live section में जाना, तो यहाँ पर देखो ये part 3 है ना? So इसी के नीचे जाना. If you go down in the live section, you will get part 2 and part 1 also. ठीक है? और ऐसा ही similar thumbnail मिलेगा आपको. Okay, so go and watch that also. Another thing is, एक और चीज है, we are having current affairs. We have made videos of current affairs also from January onwards. ठीक है, तो January 2025 से लेकर अभी तक का. So playlist पे जाना, click on the playlist. ठीक है, and when you click on the playlist, you will find this playlist. अगर आप देखोगे, है ना? So this playlist, इसमें नीचे में लिखा view full playlist, है ना? लिखा ना यहाँ पे. So click on view full playlist and you will get the entire playlist where actually we have divided 1 month current affairs into 4 parts and 4 weeks. First week, second week, third week, 4 weeks. So January ka 4 weeks, February ka 4 weeks, like that. Okay. So go and watch that also. That would be also very, very beneficial. Okay. So now let us begin with today's class. So I believe that this would be an easy question, slightly easier one. So please answer me. Which of the following date is mentioned in preamble? So these are straightforward questions and I expect you all to answer it. Okay, अब बताओ 26 January 1950, 26 November 1949, 15th August 1949, none of the above. Yes, good evening Tharidi, welcome to the class. Please keep on answering it. This is a fast revision, so I believe you all should be answering. Yes, the right answer is option B, 26 November 1949. And what do we celebrate on 26 November because of this? क्या celebrate करते हैं? What is that day called? So basically, if you see it, it is 26 November 1949. Okay, this is the date mentioned. MH is next Monday. Okay, Dharni. So please tell me that 26 November we celebrate what? It's a Constitution Day. Yes. So earlier it was called as Law Day, but I think since 2015-16 it is now called as Constitution Day. Please remember it. Please the right answer to this question. Let's move on to the next question. The next question is, which of the following articles of the Indian Constitution talks about abolition of untouchability? Batao. Article 14, 17, 21, 18. कौन से आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करती है? Yes, Dharani, very good. The right answer is option B. Article 17 talks about this. So when you read Article 17, this is the headline: abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. So that is what you should be knowing it. B is the right answer to this question. Yes. The next one is, which of the following articles of the Indian Constitution deals with right to life? इस पर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है. So I believe that you should be answering it. And a right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. I have made a detailed separate video on it. Yes, what is the right answer? Yes, Dharni. Option C, Article 21 of the Indian Constitution. मैंने एक पूरा वीडियो बनाया because Article 21 is the article which has been expanded the most by Supreme Court. Okay, so आप जाना and search this Article 21. Search this on YouTube. Career Launcher. ऐसे करके सर्च करोगे या Career Launcher Law Intense पूरा सर्च करोगे, you will get a separate video on it. Article 21 I have taught. इसी YouTube channel पर है. It is on the same YouTube channel. Why I'm saying? Because
Article 21 means a lot. Right to life, right to live with dignity, right to privacy. I'm sure you must have heard it. Then right to livelihood. And there are many things. Right to marry a person of your choice. So these all are actually drawn from Article 21. ये सारी चीजें जितनी भी rights हैं ये Article 21 से ही draw होती है. ठीक है? So that is what you should know. And also Article 21, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. The next is, when was the 44th Amendment Act enacted? And why it is significant? कुछ इसके कुछ significance बता सकते हो? Can you please tell me some significance of 44th Amendment? It happened during the who was the government? I mean, which political party was ruling in the government, or what is special about it? Yes, 1978. Very good, Dharini. And what is special about this? कुछ बता सकते हो इससे associated? Post emergency, removed right to property. Very good, Dharini. So it was brought by Janata Party government. So it is said that the 44th Amendment tried to reverse many things done during emergency. Not all, but many things that were done during national emergency. So national emergency was invoked by Indira Gandhi ji 1970. You should be knowing that national emergency is invoked by president, but for all practical purpose, the decision was taken by the prime minister. Okay. So basically, and 44th Amendment also did one thing regarding right to property. So what is the status of right to property now? Earlier, it was a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31. So now it is a which right? It is now in Article 300 capital A. It is a constitutional right. Yes, 300 capital A. Very good. Or if they have not mentioned constitutional right, they have mentioned legal right, then also it is fine. Okay. 300 capital A. Yes, Dharini, you are right. Legal right. Yes. Okay. So that is what you should know. So now we are having 6 fundamental rights. Previously, we were having 7 fundamental rights. Now let's move on to the next one. The next is, which of the following is known as mini constitution? And I think I have made an entire video on it. Okay, इसने नहीं देखा, please go and watch it because this is very, very important. Yes, in which year it happened? कोई बता सकता है? I'll be very happy to know. Many constitution, because a lot of things were changed. Yes, 42nd Amendment, 1976. Yes, Dharani, Krishi Sachdeva, you both are right. So basically what happened was 25th June 1975, say 23rd March 1977 was national emergency was invoked. Okay, national emergency. ठीक है, हाँ अब गौर से देखना. So this is 25th June. Please remember it. I have seen somewhere this article was talking that the government will be celebrating 25th June as Samvidhan Hatya Divas or something like that. So just keep on that also, because on this day national emergency was invoked. So इसी के दौरान, इसी बीच में 42nd Amendment was brought, and I have made a detailed video on it. Just go on YouTube and search this 42nd Amendment. Career Launcher करके search करोगे, you will get my video on the YouTube channel. और Career Launcher Law Entrance ऐसे search करना, you will get that video. ठीक है, we have discussed. Yes, Krishi Sachdeva, that is what I'm saying. जाके YouTube पे search करना, ये 42nd Amendment Career Launcher Law Entrance. You will get that video. ठीक है, but first you should subscribe to our channel. Then only you will get in the top notification, है ना, top search. ठीक है, search करना. Please watch it. 42nd Amendment is very, very important. I have made a separate video, so आप जाके देख लीजिएगा. The next is, how many members can be nominated to Rajya Sabha by President? बताइए. Yes, Damini Sandhu, you're right. 12. Yes. And currently, how many seats are there? Total Rajya Sabha में कितनी seats हैं? कोई बता सकता है? Career Launcher program.
ठीक है कृषि सचदेवा, नो प्रॉब्लम. इफ यू आर इनरोल्ड इन करियर लॉन्चर प्रोग्राम यू विल बी टॉट, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च ऑन YouTube also, है ना. You can learn from YouTube still again. So basically how many seats are there in Rajya Sabha currently? 233 plus 12 है ना, 245. मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 250 हो सकता है in Rajya Sabha, but currently there are 233 plus 12 are nominated. इन 233 में 229 स्टेट से आते हैं और 4 जो आता है वो यूनियन टेरिटरी से आता है ना. इसमें से 3 दिल्ली का हो गया और एक पुडुचेरी का. ठीक है, पुडुचेरी से रिप्रेजेंटेशन है ना. So this can also be asked, does union territory is union territory represented in Rajya Sabha? Yes or no? Yes, there are 2 union territories, Delhi and Puducherry, which are represented in Rajya Sabha. ठीक है. और राज्य सभा का ऑफिशियल नेम जो आर्टिकल में मेंशन है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स. दिस वर्ड इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ राज्य सभा. चेंज के बनाया, बट एज फार एज माय नॉलेज कंसर्न आई एम नॉट श्योर वेदर देयर इज राज्य सभा रिप्रेजेंटेशन और नॉट. ठीक है, आई नीड टू चेक इट. सो इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट इज जो 12 नॉमिनेशन वो ये सब फील्ड में आता है ना, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एटसेट्रा. ठीक है. The next one is, which among the following amendments designated Delhi as NCT, National Capital Territory? So the current setup we are having in Delhi, Chief Minister and Lieutenant Governor. So the Lieutenant Governor, I hope you are aware, as compared to any other governor of state, has more power. Okay. So please tell me that this current setup, the constitutional setup, was brought by which amendment and which article was inserted? Because recently we have seen Delhi elections, so that is why in February, so that is why this can be asked. Yes, Dharani, you're right. B is the right answer. There have been clash also previously between the Chief Minister of Delhi and Lieutenant Governor and all. Okay, it's a past mein hua hai, so kai baar news aaya, there are a lot of judgments associated with that. So please tell me the name of the article that was inserted. And this article actually is 239 capital A capital A. Please remember it. This is the article which governs Delhi. Okay, so you should know. अच्छा, एक चीज पूछेंगे, the Chief Minister of Delhi, since recently Delhi elections were in the news, is appointed by A, President of India, B, Lieutenant Governor of Delhi, C, Prime Minister of India, or D, Chief Justice of India. What is the right answer? Not Rekha Sharma, Rekha Gupta नाम उनका. CM of Delhi is appointed by whom? और अभी recently elections हुआ था इसलिए पूछ सकते हैं. It is appointed by president because it is a union territory. States में होता है governor appoint करते हैं, ठीक है? Because union territory means it is governed by the center. अच्छा, CM of Delhi, अगर ये पूछा जाए who administers the oath? The oath of CM of Delhi. Then what should be the answer? यानी जब CM, अगर आपने देखा होगा oath taking of Chief Minister of Delhi, who was administering the oath? यानी कौन पढ़ते हैं? होता है ना administering the oath, मतलब हाँ, यूनियन टेरिटरी के लिए ऐसे होता है. यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेरिटरी. That is why I am saying. So here the answer is Lieutenant Governor. So Lieutenant Governor reads and the Chief Minister then reads. So LG administers the oath, but the appointment is done by the President because of course this is a union territory. So ये आपको पता होना चाहिए. It is not equivalent to a state. Always be careful. So B is the right answer. अच्छा, एक चीज बताइए, अगर 239 AA, there are 3 lists under which only Lieutenant Governor has power. There is no power of the Chief Minister in those 3 lists. 3 items. What are those? चलिए होमवर्क. हाँ, एक पुलिस है. वेरी गुड. Very good. Police is in the control of Lieutenant Governor. हाँ. Roads, not roads. ठीक है. ये दो मैं नहीं बताऊंगा. Why? Because
there has to be something, has to be a homework. So go and find out. There are 3 things which are actually not under the control of chief minister, it's directly under lieutenant governor. So go and find out. Okay. So this is the homework, and after the class is over, you will be provided a recorded video. तो उसके नीचे आप comment में answer करना. ठीक है. That's homework. Now the next is, who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? This is very easy, and I hope you all should be answering. Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Bhimrao Ambedkar, none of the above. It was आसान है. Hopefully you all should be answering. Yes, Dharini, right. Dr. Bhimrao Ambedkar, C is the right answer to this question. अच्छा, recently Ambedkar जयंती मनाई गई थी ना, 14th April, the date on which he was born. Yes, Krishis Sachdeva, you are right. Dharini, Diya, you are right. नहीं, Rajendra Prasad नहीं है. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. मैंने Constituent Assembly पूरी क्लास लिया है. आप जाके सर्च करना YouTube पर. Please do not mistake. Constituent Assembly career launcher, search this. You'll get my video. या career launcher law entrance से search करना. ठीक है. ओके, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेरी चेयरमैन या इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे सचिदानंद सिन्हा थे, फुल प्रेसिडेंट फुल फ्लेश तो राजेंद्र प्रसाद, देन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, SCF इज हिज पॉलिटिकल पार्टी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे डॉक्टर भीमराव. यस, है ना. द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका आंसर बताओ. व्हाट इज मैग्ना कार्टा? व्हाट इज दिस? ये होता क्या? Because I believe that you all should be knowing. People's role in British time document. ये आपको पता होना चाहिए. This is very very important. Magna Carta of the Indian Constitution. So or they will be asking कि parts पूछ दे. Right answer is fundamental rights और या लिखा रहेगा part 3. So please remember it. Magna Carta क्या है? देखो 1215 AD की बात है. So in England there was a king that gave some rights to the citizen. तो का किंगशिप जो होता है ना, जनता को राइट नहीं देती है ना. The concept of rights belong to democracy. In kingship or dictatorship or military rule, there is no rights. Rights का कोई सवाल ही नहीं होता. You go to the North Korea and talk about rights. I mean, there is people are alien to this word. If you go and talk about in front of them, there is something called as fundamental right, free speech or something like that, they will say what you are talking about. I do not know. So the concept of rights are in general in democracy, but this is something new, that in England there was a king who gave some rights in 1215 and that was called as Magna Carta. इसीलिए जहां पे बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इस तरह की बात हो, that is related with Magna Carta. ठीक है. This is what you should be knowing about. So B is the right answer. Okay, part 3. Yes. Let's move on, है ना. तो मैग्ना कार्टा के बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो. तो 1215 में कुछ राइट्स वगैरह दिया था. इसके एकदम डिटेल रिसर्च नहीं करना, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. दैट्स मोर देन एनफ. The next is which of the following articles of the Indian Constitution is called as heart and soul? ये बहुत बार पूछा हुआ है. These are PYQs of different exam. Heart and soul of the Indian Constitution. Article 21, 32, 17, 14. What is the right answer? And why? Yes, Dharini and Krishi Sachdeva, you both are right. Right to constitutional remedies. Why? अगर मैं why पूछ दूं तो क्या? And who said this? Who said right to constitutional remedies? That Article 32 is heart and soul. Enforcing fundamental is important constitution. Yes, basically, Bhimrao Ambedkar said. Very good. So this is the article under which the Supreme Court, through its writs, it can issue writs and ensure enforcement of fundamental right. Otherwise, if there is no power of enforcement, what is the meaning of it? It is only written on the paper. है ना, कागज पे लिखा है तो कुछ होगा नहीं जब तक इन्फोर्स नहीं किया जाए ना. So that was said by Dr. Bhimrao Ambedkar. ठीक है. So ये भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, who said this? First law minister of India, है ना. इसे पता होना चाहिए. These are basic facts you should be knowing.
अच्छा को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही फॉट द इलेक्शन फ्रॉम आई थिंक नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ बॉम्बे एंड ही लॉस्ट इट. आपको पता है वो इलेक्शन हार गए थे. सो आई थिंक ही वाज ब्रॉट फ्रॉम राज्यसभा सेक्टर, है ना. यस. हाई कोर्ट इशूइंग रिट इज 226. कृषि सचदेवा ठीक है. 226 के अंदर हाई कोर्ट कर सकता है. ठीक है. The next is Article 32. The next one is freedom of speech and expression is mentioned in this article because ये कई बार न्यूज में आता है. There are a lot of debates around it, है ना. So especially recently we have seen some controversy, latent controversy, etc. उस टाइम पे freedom of speech and restriction, reasonable restrictions की बात होने लगी. That there has to be some reasonable restrictions on free speech, and all these are mentioned in which article? Yes, there is freedom of speech, but it does not mean that I can speak whatever I want. I cannot violate public order, morality. I cannot give hate speech. I cannot have a speech which includes immodest things or these things. है ना. So ये सब debate उस time पे हो रहा था. So Article 19, yes. So then that is, and Article 19 Clause 2 talks about reasonable restrictions. है ना. 8 reasonable restrictions are there. I cannot speak against sovereignty of state, security of state, foreign friendly relations with foreign states. इससे मैंने एक वीडियो बनाया था at that time. So that's what you should know. C is the right answer. So these are Article 19. 1A talks about freedom of speech. Then there are other articles, other provisions also, and Article 19. The next is which of the following is considered as precursor of preamble? Nehru Report, Objective Resolution, Government of India, 1935, none of the above. Important books and authors. अच्छा देखो दारिणी, ठीक है, मैंने नोट कर लिया आपकी बात. We'll be having most likely कल tomorrow 6 PM पे we'll be having class on Anglo-Maratha War, ठीक है, which is important from MH CET point of view. And upcoming Saturday को, मतलब next Saturday को we'll be having a marathon. I think 6 के आसपास होगा, 6 PM शाम में कहीं पे roughly होगा. ठीक है. So I'll try to include that. ठीक है, books and authors में मैं कोशिश करूंगा ऐड करने की. So precursor of preamble is option B. Yes, Dharini, Damani, you are right. Objective resolution, and it was brought on 13 December 1946 by Jawaharlal Nehru ji. ठीक है, that is what you should know. अगर आप इसमें words देखोगे, so something similar words are mentioned which was there in preamble and all. इसी तरह का words mentioned है. ठीक है, B is the right answer. Yes, Diya, Damani, you are right. Which of the following is not mentioned in preamble? कौन सा वर्ड नहीं मेंशन्ड है? देखो यहाँ पर आई एम हियर टू मार्क यू नॉट, लेकिन एग्जाम हॉल में कोई नहीं रहेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा. सो व्हेन यू रीड इट एंड यू सी नॉट, यू हैव टू बी केयरफुल कि नॉट लिखा हुआ है. ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा बहुत बार होता है, आता हुआ क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा तो पढ़े नहीं, जल्दी मरेंगे. प्लीज बी केयरफुल, ऐसा केयरलेस मिस्टेक नहीं कीजिएगा, बहुत नुकसान होगा फिर. सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज डी, है ना. यस धारिणी, कृषि सचदेवा, यू आर राइट. तो अगर आप देखोगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मेंशन्ड है, डोमिनियन ऐसा कोई वर्ड नहीं मेंशन है ना. यस दामिनी, यू आर आल्सो राइट. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो कीवर्ड्स याद रखना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है. जस्टिस तीन तरह का है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, और फ्रेटर्निटी के बारे में फिर आगे लिखा. सो अगर आप याद कर लो ये कीवर्ड्स, दैट वुड बी वेरी ग्रेट. ठीक है, तो 3-4 बार पढ़ोगे तो एटलीस्ट इतना दिमाग में चला जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप समझ जाओ कि ये वाला नहीं है. ठीक है, अगर रटा हुआ नहीं भी रहेगा, सो जस्ट गो थ्रू इट 3-4 टाइम्स, तो आपको एग्जाम में हिट कर जाएगा. Which of the following words were added in the preamble by 42nd amendment? And I think it's very easy. ये आप आराम से कर लोगे. Let me see. Yes, Dharani and Diya, you both are right. Socialist, secular and integrity. देखो सॉवरेन वर्ड तो पहले से था, ये तो होगा नहीं. डेमोक्रेटिक वर्ड भी था, यहाँ डेमोक्रेटिक लिखा ना. तो इसमें अब 3 वर्ड हैं जो नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और नीचे में इंटीग्रिटी. सो दीस 3 वर्ड्स व्हिच आई हैव हाइलाइटेड हियर were added later on. So yes, Damani, Diya, you are right. B is the right answer. Krishi, Sachdeva, you are also right. है ना. तो याद रखिएगा, that was added by 42nd amendment. The next is the idea of fundamental rights have been taken from where?
ये अगर मान लो ऐसा लिखा रहता आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्ना कार्टा, और चलो ठीक है, हालांकि मैग्ना कार्टा तो इंग्लैंड से लिया गया, बट आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट व्हिच इज इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर। मैंने एक क्लास लिया था बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फीचर्स, अच्छा सर्च करना बोरोड फीचर करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, ऐसा पूरा टाइप करोगे यू विल गेट दैट वीडियो। Yes, we have taken it from USA, Bill of Rights. Is the right answer to this question. So Article 235 is there and all. Okay. The next is the idea of fundamental right have been taken from where? Fundamental duties, sorry. And please tell me which part and which article talks about this. And I'm sure you must be aware it was not originally present, added later on. Yes, fundamental duties taken from USSR. Body of welfare state from USSR. Yes, the Krishi Sachdeva Damini, you are right. 51 capital A or part 4. Yeah. Part 4A. Yes, Dharani, very good. And Article 51 capital A inserted by 42nd Amendment 1976 is the right answer. Okay. So that is what you should know. The next is the ideals of justice mentioned in the preamble have been taken from where? UK, USSR, Australia, Ireland. जस्टिस, अच्छा कितने तरह का जस्टिस मेंशन है? मैंने आपको बताया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इज मेंशन है ना। सो सोशल जस्टिस यूएसएसआर वुड बी टॉकिंग अबाउट, बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया भी था कि जब जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सो सोशल जस्टिस की कौन बात करेगा? जस्ट थिंक लाइक दिस, we'll be talking about social justice where you will find socialism, and where you will find socialism the ideas behind this communism, socialism USSR से derive होता है, ठीक है? तो ये याद करने का तरीका है, it will be helpful, ठीक है? So B is the right answer to this question. The next is the idea of concurrent list, trade and commerce has been taken from where? ये कहां से लिया गया? Right answer is Australia. C is the right answer. Yes, Dharani, Samiksha, you both are right. And ये सब ऑस्ट्रेलिया से ले गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, concurrent list, joint session, Preamble terminology. So the right answer is C. अच्छा एक चीज और, अभी मैंने बताया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो है यूएसएसआर से लिएगा। ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये तीनों कहां से लिया गया? रेड वन जो मैंने बताया जस्टिस सोवियत यूनियन से लिया गया, बट द रेस्ट थ्री लाइन है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, कहां से लिया गया? फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यस, दामिनी, कृषि सचदेवा, यू आर राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789, बास्टाइल फोर्ट, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल फोर्ट। 14 जुलाई को लोग बास्टाइल डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर फ्रांस में, लाइक वी सेलिब्रेट 15th अगस्त, तो समथिंग सिमिलर टू दैट दे डू सेलिब्रेट। The next is which of the following article talks about right to education? Right to education की बात कौन से आर्टिकल करते हैं? देखो एक्चुअली क्या ओरिजिनली जो था ना, राइट टू आर्टिकल 21 ही को एक्सपैंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट एट आर्टिकल 21। फिर बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन 86th अमेंडमेंट 2002 एडेड द सेपरेट आर्टिकल, तो फिर इसी को मान लिया जाएगा जब सेपरेट आर्टिकल ऐड हुआ। तो ये कब से? 6 to 14 years के लिए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, सो बी इज द राइट आंसर। यस, दामिनी, समीक्षा, दिया, यू आर राइट। अच्छा बी केयरफुल, ये दिस वन एंड दिस वन इज नॉट सेम, ये एक सेपरेट आर्टिकल है जो बाद में ऐड किया गया। दिस इज 21 क्लॉज,
क्लॉज ए, यानी 21 के अंदर एक सब क्लॉज है, ठीक है ना, सो यू हैव टू बी केयरफुल। That is why 21 capital A means it was an article added, तो 21 था, 22 था, 23 था, उसके बीच में एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, so 21 capital A नाम से। अगर 21 क्लॉज ए लिखा रहेगा नहीं, 21 के अंदर बात हो रही है जाके, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वो छोटी छोटी बात कुछ और मीनिंग निकल जाता है। ओके, यस, सो दैट्स व्हाई जब हम बोलते हैं तभी बोलते हैं 21 कैपिटल ए, हम बोलते हैं 21 ए नहीं बोलते हैं, ठीक है, सो दैट इट शुड बी crystal clear. Which of the following article talks about Uniform Civil Code, which is a DPSP? DPSP मतलब Directive Principle of State Policy. अच्छा, ये कौन से पार्ट में मिलेगा आपको DPSP? Which part talks about Directive Principle of State Policy and which article is talking about UCC? अभी रिसेंटली एक स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया, कौन सा स्टेट में, प्लीज टेल मी। हाँ, पार्ट 4 में, ठीक है। अच्छा, पार्ट 4 में कैसे लिख देते, बट टेक्निकली ऐसे रोमन में जनरली वो लोग स्टैंडर्ड जो है उसमें लिखा जाता है। एंड 44, वेरी गुड। विच स्टेट? उत्तराखंड, ग्रेट 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 ग्रेट। इससे पहले एक और स्टेट में था विच इज फॉलोइंग दैट, दे आर फॉलोइंग इट सिंस द पोर्चुगीज रूल, विच इज दैट स्टेट, इसमें ऑलरेडी है। हाँ, रोमन न्यूमरल्स होता है, हाँ। Yes, Goa में. So Goa में already there is Uniform Civil Code, not 100% but near to that, and they are following it since Portuguese Civil Code and all, since Portuguese were ruling and all. Yes. So these are the things you should be knowing about. The next is, what do you mean by the term impeachment? हाँ, the first state होगा तो UCC का, तो गोवा ही लिखना, लिखा करिए, पूछेंगे कि after independence which state has become the first to enforce or come up with a UCC? मतलब आपको लैंग्वेज देखना पड़ेगा क्या लिखा है, देन ओनली यू कैन से, ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा, दैट्स द आईडिया। या ऐसे पूछेंगे रिसेंटली दिस स्टेट हैज कम अप विद यूसीसी, द राइट आंसर इज इट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक मैंने क्लास लिया था, आप जब यूट्यूब पे सर्च करना एससी जज रिमूवल करियर लॉन्चर, ऐसे सर्च करना, यू विल गेट अ वीडियो, ठीक है, where I have discussed about removal of Supreme Court judge, High Court judge and impeachment of president. All are mentioned in that. Okay. It represents appointment? No, appointment is not. Even removal would not be the correct. अगर यहाँ पे ये भी लिखा है, it represents the process of removal of a Supreme Court judge, तो भी सही नहीं। Impeachment is only for president. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया, इसको देख लीजिएगा, SC judge removal process explained, so ठीक है ना, SC judge removal career launcher ऐसे सर्च करना, you will get the entire detail. Why I'm discussing it? Because this the process of removal of a Supreme Court judge and a High Court judge is same. And recently we have seen some controversy regarding Delhi High Court judge's house. We have seen like cash were found, etc. So there were news of removal of High Court judge. तो ये सब term आ रहा था अखबार में. That is what I'm discussing. And procedure of removal of president is mentioned. Article 61 talks about this. Impeachment of president. ठीक है, that is what you should be knowing about. और मैंने बताया भी था कि majority required in impeachment of president and removal of Supreme Court judge is different and all. Special 2/3 of the total strength of the house है ना. The next is, who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Ex officio का मतलब होता है whosoever takes this post will automatically become the chairman of Rajya Sabha. So ये कौन सा है, ex कौन सा बात में? हाँ, जस्टिस वर्मा केस हुआ था अभी recently, yes. The right answer is vice president. And who is the vice president of India? Yes, Dharini, Diya, Damini, you are right. B is the right answer. Who is the vice president? Name बताइए. Yes, Ishania Singh, you are right. Mr. Jagdeep Dhankar, है ना? So ये आपको बताना चाहिए. Who is the speaker of Lok Sabha? ये बताओ. ये तो पता होना चाहिए. These are very easy questions, so I believe you all should be answering. Speaker of Lok Sabha, Mr. Om Birla, है ना? Is a member of parliament, I think from Kota in Rajasthan. तो ये ग्रीन जो कारपेट होता है ये होता है लोकसभा, है ना? अब तो नई बिल्डिंग बन गई, बट ये रेड कारपेट ये राज्यसभा होता है ना? तो जहाँ पे मेन कुर्सी पे यहाँ पे बैठते हैं, दिस इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना?
और यहाँ पर बैठते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो एक्चुअली इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और यू कैन से वाइस प्रेसिडेंट, है ना. सो ही इज ओम बिरला, मिस्टर ओम बिरला, द स्पीकर ऑफ लोक सभा, एंड ही इज मिस्टर जगदीप धनखड़. ठीक है. The next is which of the following term is mentioned in the constitution for the term budget. ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, वो कृषि सचदेवा इज आस्किंग, वो प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड कुछ था कि नॉट सीनियर मोस्ट एमपी है ये, वो लास्ट ईयर, हाँ, जो टेम्परेरी स्पीकर बनाए जाते हैं ना ओथ टेकिंग के लिए, उसमें कुछ था शायद, कुछ कंट्रोवर्सी. सो बजट टर्म एंड व्हिच आर्टिकल, प्लीज टेल मी, इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, rather some other word is mentioned. So कौन सा वर्ड है? Yes, annual financial statement, and actually it is mentioned in 112. Yes, Tarini, very good. The term. Yes. The next is which article of the Indian Constitution talks about money bill? Anyone? एक 109, 110 दोनों बात करता है. ठीक है. So A is the right answer. Yes, Tarini, Samiksha, कृषि सचदेवा, right? A is the right answer, है ना. अच्छा, मनी बिल को क्या है, दोनों हाउस से पास करना होता है, एक हाउस से पास करना होता है, व्हाट इज द केस? अच्छा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच हाउस? कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस किया सकता है? It can be introduced only in Lok Sabha, and if it is passed, sent to Rajya Sabha, Rajya Sabha does not have much power. It can give some recommendation. Even if Rajya Sabha does not do anything, after 14 days, it will be assumed to be passed. हाँ, so ये सारा पावर Lok Sabha के पास होता है. ठीक है. Yes. So that is what you should know. ये 110 में जो डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. The next is which article of the Indian Constitution talks about freedom of conscience, free profession, practice, and propagation of religion? So the freedom of conscience, what is mentioned है, because you may not follow any religion. ऐसा भी हो सकता है. You can be atheist also. That is also your freedom of choice, or that's your choice. Free profession, यानी आप जो religion चाहो choose कर सकते हो, etc. If you do not want, you can remain an atheist also. That is also your choice. It is mentioned in 25. Yes, Krishi Sachdeva, Samiksha, Dharani, all right. है ना. Freedom of conscience, free profession, practice of religion and all. Yes, Ishanya, Damani, Samiksha, you are right. Okay, the next one is please read the question and then answer me where it is mentioned. Organization of agriculture and animal husbandry. Actually ये statement, ये headline है, और उसके बाद से यहाँ से statement है, dot full stop से. The state shall endeavor मतलब कोशिश करे to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. तो उसके लिए state ने क्या किया? जैसे I'm giving you some example. जैसे आपने सुना होगा high yield variety seeds, है ना. फिर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के लिए गोकुल मिशन वगैरह बनाया गया ना, गोकुल मिशन एक्सेट्रा, है ना. नहीं, सब डीपीएस पे नहीं, प्रोमिनेंट वंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे 44 यूसीसी हो गया एक्सेट्रा, जो न्यूज में रहता है. अब देखो, इट आल्सो टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कॉ स्लॉटर. सी अक्सर न्यूज में रहता है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग. सो द प्रोमिनेंट वंस आई एम हाइलाइटिंग इट. सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 48. सारे नहीं आते नहीं, जो प्रोमिनेंट वंस है मैंने आपको चूज करके बताया. इसलिए यस, कृषि सचदेवा, यू राइट. 48, धरिनी, दामिनी, ऑल राइट. ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये अक्सर न्यूज में रहता है, सो दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट हियर. The next is who is the Attorney General of India? Please tell me. And is it a constitutional post? Yes or no? And if yes, then which article? Somebody saying Tushar Mehta, no. Yes, Dharni, you're right. Mr. R. Venkat Ramani. And if it is a constitutional post, which article? Article 76. So who is Tushar Mehta then? Tushar Mehta क्या? Solicitor General, the second senior most lawyer of the central government. ठीक है. हाँ. So Attorney General जो होते हैं, he is Attorney General, है ना.
मिस्टर आर वेंकटरमणी, आर्टिकल 76 में इनके बारे में मेंशन है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए, दिस इज द सीनियर मोस्ट, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ऐसे वर्ड लिखा रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यस आई एम एक्सप्लेनिंग, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया मतलब हुआ सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मतलब हुआ। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लॉयर होंगे, इतना तो पता होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, उनके पास आर्मी ऑफ लॉयर्स होंगे, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज देयर, उनके नीचे जो सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। और इनके अंदर बहुत सारे एएसजीज होते हैं, एएसजी मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सो बेसिकली सॉलिसिटर जनरल वुड बी ए सॉलिसिटर जनरल, सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर या सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप लिख सकते हो सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार के सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर सॉलिसिटर जनरल होते हैं, फिर बाकी उनके नीचे बहुत सारे एएसजीज होते हैं, एएसजीज बहुत सारे होते हैं, तो याद ही करना, इज इट क्लियर? बी केयरफुल, आई हैव यूज्ड दिस वर्ड लॉ ऑफिसर, यहां पर भी लॉ ऑफिसर। अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया और वन ऑफ द ऑप्शन वुड बी सीजीआई, प्लीज डू नॉट मार्क दिस। अगर ये पूछा जाए फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया, देन यू शुड मार्क सीजीआई। ये वो छोटी सी चीज है, आदमी गड़बड़ा सकते हैं। लॉ ऑफिसर मतलब लॉयर की बात करें, जुडिशियल ऑफिसर मतलब जज की बात हो रही है, इज इट क्लियर? So if the question says first law officer of India or senior most law officer of India, please do not write CGI because option में सामने में first option में CGI होगा, समझे? हाँ ये होगा आंसर, ठीक है। So be careful, that is why I have categorically written here, ठीक है ना। लॉयर और जज में फर्क तो समझते ही होंगे। So if it is saying senior most judicial officer of India और फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर, इस तरह का टर्म रहेगा, आपको क्वेश्चन देखना होगा किस लैंग्वेज में लिखा है, then you have to mark it, ठीक है। Sir, I have a doubt, is it relevant, but in MH CET English section will be asked paragraphs to add on. Please ask English faculties for that, Samiksha, because I have not seen exactly, so it's difficult for me to comment. ठीक है, आप एक बार PYQs उठा के देख लीजिए about English, because I have not seen the English section, so I think it's better for me not to comment. ठीक है, खैर, so tomorrow at 6 PM we'll be meeting with Anglo Maratha Wars, and of course this is important because from Maharashtra. And Saturday ko, the upcoming Saturday we'll be having, I think 6 PM पर जहाँ तक हमको याद आ रहा है, we'll be having we have scheduled a marathon for 2 hours. तो आप upcoming Saturday को please subscribe to the channel, तो जब भी लगेगा वीडियो you will get the notification and all. So this is all about today's class. Thank you everyone. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.